morning everyone. Welcome to GYANJYOTI online classes. Today we discuss about class 8 science. Okay. So let's begin a new chapter, which is chapter number 9. So what is our heading of the chapter? That is reproduction in animals. So student, this is a very important chapter for us also. It gives you an awareness towards your mentality and a short knowledge about the reproduction that will be occur in case of animals. Okay student, so naturally two types of things are occurred in our world. One is living thing, another is non-living thing. So the major difference between the living and non-living are the living objects or the living organism, they show a special property that distinguish them from the non-living to living. Okay, so what are the distinct property? That living organisms are capable to consume food, they digest those food, they perform the task of breathing, they make excretion, they remove their your waste product from their body to outside, they perform locomotion, they travel from one place to another place. In their way, there are many such distinct property that will be shown by that are shown by the living organism, and this property distinguish and give a special place as compared to the non-living groups. Okay, so such like regarding this type of property, the living organisms also show the special property. That property is reproduction. Okay, student. So this reproduction, this property of the living organism is such a higher level of activity that will be shown by the various animals and plant or any your living organism. So student, what is the meaning of the reproduction? The simple meaning of reproduction is to produce offspring. Okay, reproduction. Production means to produce. Okay, कुछ बनाना. Okay, so the simple meaning of reproduction is to produce offspring. Okay, so we can write also the simple meaning of reproduction is reproduction is a process. So we can write that the process of producing offspring. What do you mean by offspring? Offspring means child. Okay, if our father mother born offspring, we are the offspring of our parents. Okay, so in this, so what do you mean by the reproduction? The process of producing offspring is known as reproduction. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी वंश विस्तार करने के लिए अपना जैसा एक नया छोटा सा बच्चा है, कोई एक्स के सहारे एक नया बेबी को पैदा करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है रिप्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स डिस्कस मोर थिंग अबाउट दिस वन. So the process of reproduction is become essential for continuous existence of a species. If any species they decided that we are not going for any reproduction, then those species will be extinct from this earth. Okay, to make a existence for their species, they must do the process reproduction. They must have to produce their offspring. As a result, their species will be survive on this land. Okay, so let's discuss more thing about that. So there are more many features of this reproduction, that is in the continuity of life, in increasing the population of any species. Okay, so there are two major things regarding the reproduction, that to continuity in the life. Okay, सपोज मानो कि अगर हम ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे अगली पीढ़ी के लिए, तो हमारा जो ह्यूमन थे, हम जितना दिन जिएंगे या अर्थ पे उतना दिन हम हमारा जो ह्यूमन स्पेसिस है वो यहाँ पे अर्थ पे रहेगा. अगर हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो
हमारे आगे और कोई भी ह्यूमन नहीं रहेगा इस अर्थ में। तो ये जो स्पेसीज को बचा के रखने के लिए भी ये प्रोसेस यूज होता है। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए अगर कहीं पे सपोज 5-10 कोई भी इंसान थे, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और उनका जो नंबर्स था वो मल्टीप्लाइड हो गया, ओके, वो मल्टीप्लिकेटेड हो गया और फिर क्या होगा, उनका जो पॉपुलेशन है ग्रो हो जाएगा। ओके, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ में और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मेजर रोल होता है। तो ये रिप्रोडक्शन किस प्रक्रिया में होता है, कितनी प्रक्रिया में? सो रिप्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओके, two types of reproduction. Reproduction can be briefly classified into 2 types. One is the sexual reproduction, another is the asexual reproduction. So particularly sexual reproduction and asexual reproduction, this is the opposite one of one another. Okay, so what will be occur in case of sexual reproduction? There is the male will occur 2 things, that is a male partner and a female partner. Okay, a male partner and female partner of the same species go for mating each other and they produce their offspring. जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीके से हम कोई भी रिप्रोडक्शन कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। एक होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ज़्यादातर जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें दोनों की जरूरत होता है, एक मादा और होता है नर। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैल और फीमेल। इनमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ रहेंगे, सहवास करेंगे और उनके बीच में अंदर मीटिंग होगा। ओके, उनके बीच में पॉपुलेशन होगा तो फीमेल बाद में क्या होगा, अपना एक बच्चा देगा और जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। इसी के हिसाब से वो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, तो सेकेंड वन में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह का कोई भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होता। अगर कोई भी एक पेरेंट है, वो पेरेंट ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें दोनों की मेल और फीमेल जो एग्स और सपोज मान लो स्पर्म और ओव्यूम, इस तरह का कोई मीटिंग नहीं होता। जो गैमेट्स का कोई भी गैमेट्स का इंक्रीमेंट नहीं होता, कोई गैमेट्स के फ्यूज होने का जो गैमेटोजेनेसिस का कोई भी चीज़ नहीं होता। बस डिफरेंट फेजेस में बाद में हम डिस्कशन करेंगे। सपोज मान लो कि बर्डिंग हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया। इसी तरह का प्रोसेस से कुछ जीव हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करके अपना जो ऑफस्प्रिंग है और अपना जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको पैदा करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट discuss about sexual reproduction. So first thing that in case of sexual reproduction, that is must that a male character and a female character is most necessary. Okay, so let's discuss. So we are going to discuss about reproduction in animals. So our human being also a group of animals. It includes in the group of animals. So we are first discuss about reproduction in human. Okay. So for in sexual reproduction, first discuss about reproduction in follow the sexual reproduction process. In this process, the both male partner and female partner come together and they meet each other and they produce their offspring. Okay, so how this
complicated process will be followed, and how the total activity will be done, and what are the what are condition will be occurred in this way, and discuss all things. Okay, so first, reproductive organ in humans are called gonads. Okay, so let's remember something, that your gonads. Okay, here what do you mean by gonads? Gonads, in case of human being, the reproductive organ are called as gonads. So gonad क्या है? और बहुत तरह तरह के ऑर्गन्स, सपोज मान लो कि हैंड हो गया एक ऑर्गन, ठीक है। तो ऑर्गन क्या होता है? पहले फर्स्ट होता है सेल, कुछ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, और कुछ टिश्यू बनाते हैं, कुछ टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं आपका ऑर्गन, ठीक है। और कुछ ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक कंप्लीट बॉडी। सपोज मान लो कि फर्स्ट हमारे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, सपोज मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हो गया एक्सक्रीटोरी सिस्टम, फिर हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, फिर हो गया आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसी तरह का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन से बने होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन देखते हैं हम, आई हो गया, ईयर हो गया, हैंड हो गया, स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया, ये सब एक एक ऑर्गन है। तो इस तरह में जो भी ऑर्गन्स है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, वो ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? गोनाड्स कहा जाता है। ओके, सो यू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट गोनाड्स। सो व्हाट इज गोनाड्स? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस आर कॉल्ड एज gonads. So what are the gonads? Are the testes are the male gonads and ovaries are the female gonads. So I have also told that the two main thing is required for the reproduction in the sexual field. That is, one is जो male part and another is female part. So the gonads which is present in the field of male, that is called your testes, and the gonads which is present in the female, that is called your ovary. Okay, so these are the two gonads which will be present in case of human beings. Okay, so the testis is a male gonad and ovary is a female gonads. Okay, next, so these gonads produce many things, okay, which will be carry out the process of sexual reproduction. Let's discuss. Okay, gonads produce reproductive cells called gametes. Okay, तो ये जो gonads है, gonads क्या है? ये जो reproductive organ है, जो testis है, एक तरह के organ है जो कि human body में exist करता है, ये कुछ कुछ पैदा करते हैं, ठीक है। ये जो ovary हो गया, ये female gonads है, female की body में रहेगा ovary, और ये testis है, वो male part में होगा, जो कि body के अंदर रहता है, ठीक है। ये जो gonads है, ये गोनाड्स क्या करेंगे? कुछ सेल पैदा करेंगे, कुछ सेक्स सेल पैदा करेंगे, ठीक है, कुछ सेक्स का छोटा छोटा रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करेंगे। गोनाड्स प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट्स। ओके, ये जो वर्ड्स आ रहा है, ये गोनाड्स हो गया, गैमेट्स हो गया, इसको सही तरीके से माइंड में सेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोनाड्स क्या है? ऑर्गन, ठीक है, बहुत सारे जो ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, वो हो गया आपका गोनाड्स। और गोनाड्स क्या करेंगे? कुछ रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करेंगे, कुछ रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करेंगे। तो गोनाड जो रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो गोनाड जो सेल पैदा करेगा, कौन सा सेल? रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करेगा, उसको हम कहेंगे जो गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते हैं? एग्स आर द फीमेल गैमेट्स एंड द स्पर्म आर द मेल गैमेट्स। तो ओवरी जो रहेगा, ये जो ओवरी क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा जो एग, ठीक है। और जो टेस्टिस जो होगा, ये गोनाड है, गोनाड क्या करेगा? सेल प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? गैमेट्स। तो टेस्टिस जो होता है वो क्या होगा? जो मेल गोनाड्स है वो प्रोड्यूस करेगा एक तरीके का जो रिप्रोडक्टिव सेल, उसको कहेंगे हम स्पर्म। ओके, तो स्पर्म क्या हो गया? एक मेल गैमेट्स, एग जो हो गया एक फीमेल गैमेट। देखो टेस्टिस जो होता है वो मेल पार्ट में प्रोड्यूस होता है,
ये ओवरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोड्यूस होता है। तो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। तो टेस्टिस, ओवरी ये हो गया आपका गोनाड्स, स्पर्म और एग हो गया ये आपका गैमेट्स। तो स्पर्म क्या है, एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि गोनाड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। उस तरह एग भी क्या है, एक फीमेल गैमेट्स है जो कि ओवरी के द्वारा और ओवरी जो गोनाड्स है उसी के द्वारा प्रोड्यूस किया होता है। ओके, आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द गोनाड्स एंड गैमेट्स। ओके स्टूडेंट, so first discuss about the male reproductive system. We are going to discuss about the human reproductive system. In case of human, we are able to discuss about two things, that is male reproductive organs. After that we are discuss about the female reproductive organ, then go for fertilization. Okay, so first discuss about male reproductive system. Okay, male reproductive system. In case of sexual reproduction, you must record two types. One is male part and another is female part. So there is a different construction in the reproductive system in case of male and such a different construction in the female reproductive system. So first discuss about the male reproductive system. What are the different organs that are present and that are work for the process of reproduction? Okay, so first thing that the mainly three things are the play a major role in case of male reproductive system. One is your testis and the vas deferens, or the another name of vas deferens is the sperm ducts. Okay, so another name is that your sperm ducts. Okay, and third one is your penis. These are the three major organs present in case of human or male body. Okay, so here first here also we have learned that the gonads, the male gonad, that is testis. Here this is your male gonads which produce what, sperm. So the major role in the male reproductive system is your testis. So in case of human body, these are the two testes which is present inside the scrotal sac, which is present at the below the abdominal cavity, which is present at the outside of the body. Okay, so here these are the two testes. Okay, testes which is present inside of the scrotal sac. Okay, next from these two testes, two pipes are being originated and moves upward. These two upward pipes are called the vas deferens or the sperm ducts. Okay, so here these two things are the, so here two testes are present in case of human body and two vas deferens or the sperm duct are present. This is 2 in number and this is also 2 in number. After that this two vas deferens forms with the various pipe-like structure and it forms a muscular organ. This muscular organ is called your penis. Okay, so this is the copulatory organ which ejects the sperm inside of the female body. Okay, so let's discuss briefly about all these things. So here in case of human body only one penis exists there and the two vas deferens of the sperm duct and two testes are there. This is the all about the male reproductive organs. Okay, not the system, only the organ. Let's discuss briefly about the what is the role of the testis. ये जो testis है इनका रोल क्या होता है? So the testis produce a gametes or male gamete that is called your sperm. Okay, so this is the normal construction of the sperm. So if we magnify the picture of a sperm, then it will be look like that. This, okay. So this is a single cell organ. Okay, it is made up of only a one cell. ये एक ही सेल में बना हुआ होता है. सबसे जो छोटा सपोज मान लीजिए यूनिसेलुलर जो बोलते हैं, ये एक ही सेल में बना हुआ होता है. इसका बॉडी जो कंस्ट्रक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है इसका हेड, फिर होता है इसका आपका
बॉडी पार्ट्स, फिर आता है इसका टेल पार्ट्स। ठीक है, इसका जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड और जो रिमेनिंग बॉडी होता है और होता है टेल। ओके, it is shaped like a tadpole. It has a head, middle piece or long tail. Sorry, this is not your body, this is your middle piece or this is your long tail. Okay, this long tail helps the sperm to swim and help in the movement of the sperm inside the female body or female reproductive tract, that is your vagina. Okay, so the sperm are transferred to the penis by the sperm duct being transported. So what will be happen at there? So here the testes or the sperm will be produced at the testes, and this sperm will be carried out by the vas deferens or the sperm duct. After that, the various through the various pipe, it will move up to the penis, and it will be ejaculated by the penis into inside the female reproductive tract, that is inside the body of your vagina. Okay, so this is all about the male reproductive system. Now discuss about the female reproductive system. And also the testes secrete one type of hormone, that is the testes secrete a hormone called your testosterone. Okay, this is one type of hormone that will be secreted by the testes. Okay, so testes secrete one type of hormone that is called your testosterone. Okay, so what is the role of the testosterone? What is the uses of this testosterone? Okay, so it helps or it is responsible for the development of the secondary sexual character like cracking of voice and growth of beard in male. The testes produce millions of sperm like this. Okay, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सीक्रेट होता है टेस्टिस के सहारे, ये क्या करता है? टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्स। जब आपका टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, ये कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूस को शो करता है। सपोज मान लीजिए अगर कोई अंडर 15 एज होता है तो उसके फेस में बियर्ड वगैरह नहीं आते, जब उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होना चालू हो जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद क्या होता है, उसके फेस में बियर्ड आ जाते हैं। ठीक है, और उसका जो वॉइस है, पहले जो उसका वॉइस एकदम से स्मूथ होता था, फिर धीरे धीरे उसका जो वॉइस का पिच लेवल है वो घट जाएगा, उसका वॉइस एकदम से हार्ड हो जाएगा। इसी तरह का जो कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी शो करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है? टेस्टिस से सीक्रेट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक तरीके का हार्मोन। ओके स्टूडेंट, सो हो गया ये आपका सारा डिस्कशन अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फाइनली आपने क्या पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म जनरेट करता है। स्पर्म vas deferens से और स्पर्म डक्ट के सहारे जो मूव करता है, और पेनिस के थ्रू, पेनिस एक इजैकुलेटरी ऑर्गन है, ये इजेक्ट करता है इसको, स्पर्म को किसके अंदर इजेक्ट करेगा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इजेक्ट करेगा। इतना है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, so now discuss about the female reproductive system. We have discussed about the male reproductive system. After that, discuss about female reproductive system. So what are the organs that are present inside the female reproductive system? That are the ovaries, a pair of ovaries, which means it has 2 ovaries, and a pair of oviduct and a uterus. Okay, these are the major organs that are present in the field of female reproductive system. Now where are they present? And now plot them inside the picture. Suppose this is the female reproductive system. So here you have seen these things. These are the 2 ovaries. Okay, here this is your ovaries, and this is also your ovaries. Okay, so at the
sides, two ovaries are present there. From the ovaries to collect the sperm, two pipes are they extended. These pipes are called your oviduct. Okay, just like in case of man, there are two testes and two vas difference. In the same case, two ovaries are there and two oviduct are there. And the oviduct is also called your fallopian tube. Okay, another name of oviduct is also your fallopian tubes. Okay, this is the same name of your oviduct. Okay, there is no difference between the oviduct and the fallopian tube. Sometimes you have seen that it is mentioned as your fallopian tube also and also oviduct. ओके, तो ये जो होता है दोनों साइड में दो ओवरीज होते हैं, दो ओवरीज से कनेक्ट होकर दो पाइप रहते हैं, इसको ओविडक्ट कहते हैं या फिर इसको आप फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट होता है ये हो गया आपका यूटेरस। ओके, तो फिर हो गया जो निचला हिस्सा होता है ये होता है आपका वजाइना, जो भी रिसीव करता है स्पर्म को और स्पर्म मूव करता है और फिर यहाँ पे ओवरी से जो एग आया हुआ होता है वहाँ यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो ओवरी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ओवरीज है। ओवरीज क्या क्या सीक्रेट करते हैं देखते हैं। ओवरी जो फर्स्ट एक एग सेल प्रोड्यूस, एक जो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव सेल को हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ठीक है, एग को फिर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको ओवा और ओव्यूम भी कहते हैं। ठीक है, इसको ओवा भी कहा जाता है और एग भी कहा जाता है। तो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये ओवरी से प्रोड्यूस होगा आपका ओवा या फिर एग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जिस तरह से टेस्टिस हार्मोन सीक्रेट करता था, ये भी एक क्या है, ये हो गया आपका सेल रिप्रोडक्टिव सेल। फिर क्या हुआ है, हार्मोन भी सीक्रेट होगा। मेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। ये क्या करेगा, एक तरीके का, ये भी एक तरीके का हार्मोन सीक्रेट करेगा। इस हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरीज का मेल जो दो फंक्शन है, क्या एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करे जो कि एग हो या ओवा, फिर क्या होगा एक हार्मोन सीक्रेट करेगा। जो हार्मोन क्या होगा आपका, इसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, टू डेवलप द रीजन ऑफ pubic hair and also development of the breast, okay, and to brother and to deposition of fat in case of the pelvic region। तो क्या होता है, जो pubic hair होता है, जो प्राइवेट पार्ट में जो हेयर ग्रो करता है, वो इस हार्मोन के वजह से होता है। फिर क्या होगा, जब से एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होगा तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा। फिर जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन में फैट डिपॉजिट होगा, वो थोड़ा ब्रेडर हो जाएगा। ये सब फंक्शन क्या होगा, एस्ट्रोजन का है। तो ठीक है, ये सब आप डिस्कशन देखा कि इसके बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है। ओके, तो फाइनली आपने देखा क्या हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट में क्या आ गया, स्पर्म आ गया। यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, एग। ये जो स्पर्म और एग दोनों क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ये दोनों आपस पे मीट करेंगे। तो जो प्रोसीजर पे मीट होगा उसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे सपोज मान लो कि एक एग है और ये सपोज यहाँ पे एक एग जब कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ओवरी से प्रोड्यूस होगा, जो आपका यूट्रस के आसपास रहेगा। तो उस टाइम जब पॉपुलेशन होगा तो यहाँ से रिजल्ट होगा आपका स्पर्म। इस तरह स्पर्म मूव करता हुआ जाएगा, तभी बाद में ये एग के साथ मीट करेगा। जब एक एग रहेगा वहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आके इसके साथ कंटैक्ट करेंगे और इसके साथ जो फ्यूज होने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन फाइनली एक ही स्पर्म जो है आपका, जो उसके साथ एंटर करता है उसके साथ फ्यूज हो पाएगा। सो ये जो प्रोसेस यहाँ पे एग और स्पर्म, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो एक दूसरे से मीट करते हैं, ये जो प्रोसेस बनता है इसको कहते हैं आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ बोथ मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सेल
फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है एग, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ये होता है इम्पोर्टेंट जो कि आपका एक रिप्रोडक्शन के लिए। ये दोनों जब एक एग सेल और एक स्पर्म सेल एक दूसरे से मिलेंगे तो जो मिलकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो जाइगोट होगा ये फाइनली ये एंटर कर लेता है, हेड पार्ट एंटर करेगा, इसमें जो न्यूक्लियस वगैरह होंगे, इसका जो न्यूक्लियस है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और इसमें दो छोटे छोटे सेल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये तो सपोज मान लो मेल का है, ये फीमेल का है, ये आपस में मिल जाएंगे और एक क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होते होते क्या होगा, एक बेबी का सेल रहेगा और बाद में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक ऑफस्प्रिंग के रूप में पैदा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ये भी बहुत तरीके से होता है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसका, उसका जो मीनिंग क्या है, उसका प्रोसेस, उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकते हैं। तो जाना कि हमने दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो हमने पहले देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में किस तरीके के होता है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। तो पहले हमने बात किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें क्या होता है, फिर बाद में हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कुछ होता है। ठीक है, फिर बाद में जो होता है एग से रिप्रोड्यूस होता है फीमेल से और स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है मेल से, वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ये जो मिलन प्रोसेस है इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अगली क्लास में हम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।